ओके। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रथा पे। प्रथा, द सोशल मीडिया ऑफशूट ऑफ काव्य वर्षा। और आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, श्री अंकित भुक्तानी जी, डेलीगेट एट यूएन वुमेन। और जो आज का चर्चा का विषय है वो है हिंदू सिविलाइजेशन एंड इट्स हिस्टोरिक एस्पेक्ट ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी। मैं अंकित जी के बारे में सभी को बता दूं तो ही इज human rights advocate with primary focus on LGBTQA plus community, recipient of Global Diversity and Inclusion Leadership Award by World HRD Congress, and have addressed United Nations Human Rights Council. He is founder of Queer Hindu Alliance. स्वागत करती हूं अंकित जी आपका आज के इस इंटरव्यू सेशन में। और जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही अहम। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और आप सबसे मिलके मुझे बेहद खुशी हुई। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो सबसे पहला मेरा प्रश्न है, जब भी हम जेंडर राइट्स की बात करते हैं, अब क्यों उसको हमें रिलीजन की तरफ से एक वैलिडेशन की आवश्यकता होती है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कैथोलिक नेशंस जितने भी हैं, दे लुक अप टू वेटिकन सिटी, पोप की तरफ वो देखते हैं। LGBTQA+ कम्युनिटी को वैलिडेशन अगर वहां से मिले तब वो आगे बढ़ाएं, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड एज पनिशमेंट। तो आपको लगता है कि हाउ फेयर इट इज टू हाउ फेयर इट इज कि जेंडर राइट्स को हम रिलीजन की तरफ से एक वैलिडेशन की आवश्यकता है? हाउ जस्टिफाइड इट इज? लुक, व्हेन यू टॉक अबाउट एनी कॉज, आप किसी भी मानवाधिकार की बात करते हैं, किसी भी, सिर्फ मानवाधिकार की नहीं, किसी भी मुद्दे की बात करते हैं, उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति के आयामों को कई दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्या वो विज्ञान के तौर पे स्वीकार्य है कि नहीं? क्या वो पर्यावरण की दृष्टि में स्वीकार्य है कि नहीं? क्या वह आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए स्वीकार्य है कि नहीं? क्या वो जिस भी स्थान पे है, उस देश के जो भी कानून है उनके मुताबिक मान्यता प्राप्त है कि नहीं? और उसके साथ साथ क्या वह धर्म के संदर्भ में भी स्वीकार्य है कि नहीं, राइट? So it is not just the religion which is an exclusive parameter to check anything which is right or wrong, moral or immoral, but there are multiple dimensions to look at any cause. LGBT cause are not exclusive of that, right? So we have seen in history that when a conversation uh, of black people having rights came in, or women having rights to vote came in, all these aspects were explored, and debate and conversation happened from all dimensions, including religion, and then the next step were taken. Now, that is the primary understanding, that why religion is an important part of it. That is my answer to that. Is this not just the religion, but all dimensions of human experience is part of it, not just religion exclusively. Second point is, however, if you see human history, we will see that religion plays a very crucial part in designing the consciousness of society, because religion controls so much of our thought process. What is right and wrong, what is moral and immoral, is decided primarily by religion. And that's why religious approval for any cause plays in a much more important role than any other aspects which I talked about just now. To sum up the answer very quickly, the LGBT cause has to prove itself from all these angles, including religion. But let's also understand one thing, that it is not the only religion which will play a key role in getting acceptance of LGBTQIA community. Because remember, religion is a two-way street. It is a space of interpretation. And I always say this, that if I can find a queer affirmative interpretation of any religion, not just Hinduism, but any religion on the planet, tomorrow there can be people who can interpret the same religion differently, or to, for the matter of the fact, they have been interpreting it differently, which criminalized LGBT identity, which has made LGBT identity sin and the subject of condemnation, using religion as a tool. So
we can use religion as a tool of advocacy for sure, but at the same time, religion cannot be an exclusive parameter to consider something right or wrong. There can be other parameters as well, and there needs to be other parameters as Definitely, and our and the whole conversation is about that it need not to be just centric to one factor. But as you said, that religion is not just one factor, but you also quoted that religion somehow frames the consciousness of society. So, what do you think that what's the way forward? Because we consider religion to be epicenter of a lot other things. well. I would say that there are two ways to look at any movement, whether it's LGBT rights movement or any other rights movement. One is on the policy level, the fight you have in the courts, but that is not enough. After that, or even when the fights are going on in the courts, there is another struggle which is happening on the streets, which is getting acceptance from the people on ground. So when we look at the courts, I would use, more than religion, I would use constitution as a tool to talk about our rights, saying that, hey, yes, we as a civilization have always accepted diversity, which includes gender diversity, orientation diversity, and all so on and on. But at the same time, when I'm standing in front of the court, I want court to recognize my rights based on the constitution and not a religious text. So that's the one way to look at it. But that's not enough, because let's also understand one thing, that courts have given n number of judgments, parliaments have passed n number of laws, but are they implemented on ground? Another great example, a very recent example, is increasing the age for marriage for girls, that is from 18 to 21, right? So much of debate and conversation is happening around it, and then one of the primary uh, 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 argument which is thrown against it is saying that, hey, we already have a law which prohibits marriage of girl below 18, and yet we see in our own country there are so many child marriages which are happening, though historically the number of child marriage cases are decreasing, but it has not completely stopped, correct? So एक बात होती है कि पॉलिसी में चेंज लाना, चाहे वो न्यायालय की ओर से हो, चाहे वो पार्लियामेंट या संसद की ओर से हो, और दूसरा स्ट्रगल होता है जो समाज में बदलाव का स्ट्रगल होता है, जहां पे लोगों को समझाना होता है कि ये सही है या गलत है, और वहां पे आई थिंक धर्म की सहायता ली जा सकती है. So there we can use religion as a tool of advocacy when it comes to making people aware of it, making people understand, making people accept. Because I always say this, that religion has been used as a tool of discrimination against LGBT people for centuries. Now it's time for we, the queer people, to reclaim our space within religion. So, to answer your question, one is the policy, second is implementation of that policy. At the policy level, you talk about science, constitution, and so on and so forth. And it comes to implementation of policy in society, definitely you can use religion and take the shelter of religion to make your case. Definitely, and I would use the term religion consciousness for this. And it's very important that how we are evolving with this concept and start being more acceptable and as we are evolving. So, when it comes to homosexuality, it is always seen as sin to be sentenced to the highest form of punishment, including death sentence in Abrahamic religion, which consists of more than 55% of the world's population. Being founder of Queer Hindu Alliance, what according to you makes Hindu civilization an exceptional case when it comes to gender assimilation? See, when we talk about Hinduism, the beautiful aspect or dimension of this faith is that there is no one authority, one God, one text, or one way to look at life. When I was young, my mom used to take me to a nearby Shiva temple. Once we reached there, my mom used to ask me that you need to go around the deity or a temple, and after that, you offer your pranam.
And this ritual of going around the temple, the circumambulating the deity or the temple in Hinduism is called as pradakshina, which this ritual can be found in all Indic religion, not just exclusive to Hinduism. Hello. Uh, Having trouble connecting. I guess there have been some network glitch, but Which now I think it's includes, peaceful. so when we talk about pradakshina, the ritual of pradakshina, which is not exclusive to Hinduism, which includes Jainism, Buddhism, Sikhism, and Buddhism, all of these four faith have some sort of this ritual called as pradakshina. Now look at this ritual of pradakshina. What are we doing? There can be many interpretation or many meaning of it, but one beautiful meaning which I really like, and that is, you go to the temple. Before you offering your pranam, you are going around the deity. That means if I'm deity is at the center and I'm standing at point A, my view of the deity would be different than if a person is standing at point B, then a person can who is standing at point C. And how many points can there be? N number of, because there can be n number of point on a circle. So whenever somebody says that this is the truth or this is the only interpretation of a religion, Hinduism or Hindu or Indic approach to be precise will say, wait, that is your ego speaking. That is not the truth. Because there can be n number of ways, n number of worldview. And the beautiful Sanskrit word for the worldview is darshana. So there can be n number of darshan to look at the same truth. Based on the position you are standing, your darshan will be different. And the way you will look at the world would be different. आज मेरा दर्शन मेरी स्थिति में कुछ और हो सकता है, कल वही दर्शन मेरा कुछ और हो सकता है, और किसी और का आज की स्थिति में कुछ दर्शन और हो सकता है. और अगर मैं ये मेरे दर्शन के आधार पे फाइट करने लगूं कि नहीं यही सत्य है, क्योंकि कोई और कहेगा कि मेरा दर्शन अलग है, तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि हम हर कोई का दर्शन अपने अपने स्थान पे सही है. तो ये जो प्रदक्षिणा का भावार्थ है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, जो हमें इंडिक सिविलाइजेशन से मिलता है. तो when we talk about why queer Hindu alliance, the reason why queer Hindu alliance, that was your basic question, is there in this example of pradakshina. Ki me as a queer person, the way I look at my faith, the way I look at my religion, the way I look at my scriptures, I see there is so much of acceptance, there is so much of openness, there is so much of space for me to breathe, there is so much of space for me to grow, and there is so much of space for me to prosper the way I am, despite there are religions who are telling me that I'm a condemnable entity, I'm a sinner, I deserve hell. All these things are not told to me in Hinduism, and that is the message I want to give to the world, and that's why Queer Hindu Alliance is there. सर, हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हिंदू सिविलाइजेशन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. इसी पे मेरा प्रश्न है. हमने बहुत सारे ऐसे हिंदू डिटीज को देखा है, देव बीन रिप्रेजेंटेड एज जेंडर फ्लूइड. Same sex relations and gender variants have been represented in various Hindu scriptures. I request you if you can cite more of such mythological things and that have been cited. Definitely. First of all, I like to use the word theology instead of mythology, because mythology has a different connotation with the use of that word. So I can go on for this one question itself for over 1 hour or 2 hours, because I have done extensive research on it for over 2 years, and I do an exclusive PowerPoint presentation on this topic. And then we can talk more on it some other day. But give it to you in a nutshell. Let's start from the basic understanding of the concept of Jivatma. So Hinduism में हम कहते हैं कि हम सब आत्मन हैं, right? We all are soul, and soul is gender beyond. I'm not using the word gender neutral, but gender beyond.
यानी कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। आत्मा अपने आप में एक एंटिटी है, इट्स अ जीवात्मा जो भगवान से अलग हुआ है। सो गॉड इज अ सुपर सोल, then the jivatma is a part and parcel of the same super soul in as an individual level, right? And these jivatmas are gender beyond. Why? Because आज मेरा शरीर एक पुरुष का हो सकता है, कल मेरा शरीर एक स्त्री का भी हो सकता है, उसके बाद के जन्म में मैं शायद पक्षी बन सकता हूँ, मेरे शायद पिछले जन्म में कोई और कीड़ा मकोड़ा रहा होऊंगा, उसके पहले जन्म में शायद कोई मैं वनस्पति रहा होऊंगा। और ये जो जीवात्मा की यात्रा है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है उसके कर्म के हिसाब से। जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑलमोस्ट सारे इंडिक रिलीजन की, सिर्फ हिंदुइज्म की ही नहीं। तो जिस तरह से ये यात्रा चलती रहती है, और कब तक चलती है, जब तक आपका निर्वाण नहीं हो जाता, मोक्ष नहीं हो जाता, या हर एक संप्रदाय में उसकी अलग अलग विचारधारा है कि किस तरह से मुक्ति होती है। तो अगर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम जीवात्मा है, और जीवात्मा शरीर जो है वो इस जन्म के तक ही मिला हुआ है, और इसके बाद हमारा शरीर बदलता रहता है। जैसे कि हम वस्त्र बदलते, जैसे भगवत गीता की भाषा में कहें तो भगवत गीता में वेरी फेमस श्लोक है कि हे अर्जुन, तू ये शरीर नहीं है लेकिन तू आत्मा है, और जिस तरह से मनुष्य अपने वस्त्र बदलता है, उसी तरह से जीवात्मा भी अपने शरीर बदलता रहता है। तो अगर हम एक आत्मा है और जिसका शरीर बदलता रहता है, जिसका कोई स्थायी भाव नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो बेसिक नेचर है वो जेंडर बियॉन्ड है। उसका कोई कोई अपने आप में एक पर्टिकुलर जेंडर नहीं है, राइट? तो पहली बात तो ये हो गई कि वी एट अ कोर सेल्फ फ्रॉम हिंदू थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वी आर जेंडर बियॉन्ड, ऑल ऑफ अस, ऑल लिविंग एंटिटीज। पॉइंट नंबर 1. Now, point number 2, when we come to different Puranas and Itihasas of Sanatan Vedic Dharma, we have a very famous examples, like n number of examples actually. To start with, the very famous one is the example of शिखंडी। अब शिखंडी की कहानी आप का दर्शन करेंगे महाभारत में या जया में। जो जया महाभारत का उसके पहले का नाम है, उसके बाद उसको महाभारत के तौर पे कहा गया, तो जय में और या फिर महाभारत में उसका दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि शिखंडी एक ऐसा पात्र है जो बचपन से एक जिसका जन्म जो है वो एक स्त्री के तौर पे होता है, जो जो यक्ष के आशीर्वाद से एक पुरुष बनता है और जो अपने आप को पुरुष मानता है, राइट? उसके बाद जो है जब महाभारत का युद्ध होता है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों का होता है। क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस भारतीय है, तो मुझे महाभारत के बारे में ज्यादा समझाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि आपके लोगों को पता ही होगा कि महाभारत क्या है और कौरव पांडवों के युद्ध के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर वहां पे ये है कि महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला, बराबर है? अब ये 18 दिन के युद्ध में 9 दिनों तक ऑलमोस्ट टिल 50% ऑफ द वॉर युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई भी विशेष योद्धा ना ही कौरवों की साइड से ना ही पांडवों की साइड से पराजित हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसका कारण ये था कि भीष्म पितामह जो कौरव सेना के आगेवान थे, सेनापति थे, उनका उनके दायित्व था कि कौरवों की रक्षा करना। तो वो अपनी साइड से, कौरवों की साइड से किसी को भी मरने नहीं दे रहे थे। एट द सेम टाइम उनका जो प्रेम था, उनका जो वात्सल्य था, अंदरूनी वात्सल्य था, वो पांडवों की ओर था। तो वो पांडवों की साइड भी किसी को मार नहीं रहे थे। तो ना ही कोई पांडवों की साइड का मर रहा था, ना ही कौरवों की साइड का कोई पराजित हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि ये तो युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक भीष्म पितामह को हम कुरुक्षेत्र के मैदान से हटा नहीं देते। Till the time Bhishma Pitama is not neutralized from the war battlefield of Kurukshetra, the war could go on till eternity. And that is when Shikhandi is brought in. Now look at this perspective. शिखंडी का आगमन महाभारत के युद्ध को एक सकारात्मक धर्म की ओर मोड़ता है। और शिखंडी कौन है? एक क्वेयर कैरेक्टर है। तो हमें अपना इतिहास इस तरह से कभी बताया नहीं गया है, राइट? नाउ शिखंडी को जो भी आते हैं तो उनका स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, उनको जो है वो अर्जुन के रथ में, जिसके भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी है,
उसमें स्थान दिया गया है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर और अर्जुन के नीचे, उनके बीच में शिखंडी को स्थान दिया गया है। शिखंडी is placed above Lord Krishna from the image point of view. And now, from the civil rights perspective or human rights perspective, now look at this. Krishna is giving place to somebody who says that my gender identity is male because I want to consider myself as male. Against this ideology is what ideology? An orthodox ideology which says, no, if you are born as a female, I'll consider you as female. तय आपको करना है कि आप भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में हो या आप कौरवों के पक्ष में हो। भगवान कृष्ण उस जेंडर आइडेंटिटी को स्वीकार करते हैं, उस जेंडर आइडेंटिटी को अपने रथ पे स्थान देते हैं, जो जेंडर आइडेंटिटी शिखंडी स्वयं अपने आप को मानते थे, वो अपने आप को व्यक्त करते थे, जो है पुरुष की आइडेंटिटी, सिवाय कि वो फीमेल में जन्म आए थे। और भीष्म पितामह एक पीढ़ी दर पीढ़ी की जो आइडेंटिटी, एक ऑर्थोडॉक्स आइडेंटिटी, उसको कैरी करके, नो, आई विल नॉट फाइट यू बिकॉज यू आर फीमेल, you are born as female, I'll not consider your gender change and I'll treat you as female and that's why I'll not fight with you. और अंत में क्या होता है? उन्हीं की जिद के कारण, उन्हीं के एक तरह से अपने आप के हठ के कारण भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र मैदान से हट जाते हैं और धर्म की संस्थापना होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जब गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, तो इसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिया, बट एज अ क्वेयर पर्सन मुझे लगता है कि 0.000001% हम क्वेयर का भी योगदान रहा है, क्योंकि 9 दिनों तक तो युद्ध अनंत काल तक चलने वाला था, जिसको एक मोड़ पे देने का काम शिखंडी ने किया, जो एक क्वेयर कैरेक्टर है। Very beautifully I would repeat that, very beautifully explained, and I'm sure ये aspect जिस तरीके से आपने समझाया है, ये narrative शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो और आज एक enlightenment सा हो सभी के लिए। दूसरे प्रश्न पे आना चाहूँगी। हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी philosophies हैं which have coexisted despite being contradictory, which have included gender and sexual liberty. पर अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो LGBTQ एक फोबिया सा है। इवन हमें 21st सेंचुरी तक लगा सेक्शन 377 को अबॉर्ट करने में, लेकिन फिर भी वी हैव नॉट बीन सो एक्सेप्टेबल फॉर दिस फैक्ट। What do you think? जहाँ इंडिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन इतना वेलकमिंग था, they were so they included everything, वो चेंजेस कैसे आए कि आज एक डिस्पैरिटी हो गई? Beautiful question, and to be very honest, even I keep wondering on these questions, that where and what went wrong, because this is the civilization where, from the scripture point of view, which we discuss from the point of view of scripture, that we are Atman, to various stories which are described in Puranas. So शिखंडी की तो मैंने सिर्फ एक ही कहानी कही, उसी तरह से बुद्ध की कहानी है, उसी तरह से आप देखेंगे तो भगवान अयप्पा जो केरला में और साउथ इंडिया में बहुत ही पूजनीय स्थान धराते हैं, उनका एक नाम हरिहरस होता है, यानी कि भगवान हर शिव और हरि भगवान विष्णु के पुत्र के रूप में माने जाते हैं। चाहे आप देखिए तो भगवान मोहिनी की कहानी है जो हमें मिलती है पुराणों में से, खास करके भागवत और विष्णु पुराण में, कि जहाँ पे भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत सारी फोक टेल की कहानी, यानी कि सिर्फ मुख्य शास्त्र गण नहीं, लेकिन हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्थानिक कहानियां और स्थानिक मान्यताएं हैं, जिसमें भी हमें बहुत सारी जेंडर डाइवर्सिटी और क्वेयरनेस देखने को मिलती है। जैसे कि तमिल में, तमिलनाडु में आप जाएंगे तो बहुत फेमस कहानी आती है सोमवती और सुमेधु की कहानी, जहाँ पे दो पुरुष जो है वो साथ में
रहते हैं, क्योंकि वो एक राजा के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें शादी करनी है, लेकिन शादी करने के लिए गाय चाहिए, लेकिन हमारे पास गाय नहीं है, तो आप हमें गाय का दान दीजिए। जब भी राजा नहीं, रानी कहती है कि मैं दान तो दूंगी लेकिन केवल एक मैरिड कपल को दूंगी। तो सोमवत जो है वो जेंडर अपना झूठा झूठा जेंडर चेंज करके सोमवती बनता है, और वो रानी के पास जाता है कि आप हमें गाय का दान करें। रानी उनको गाय का दान कहती है, लेकिन रानी बहुत सीधी सादी सामान्य औरत होती है, तो उनके जो भगवान है वो ऐसे कहते हैं कि अरे तुमने मेरी भक्त को जो है वो छल किया है, तो जाओ मैं तुम्हें जो तुमने सोमवती का रूप धारण किया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सोमवत से सोमवती बना देता हूँ। और बाद में सोमवती और सुमेरु साथ में रहते हैं, राइट। तो ऐसी कहानी हमें प्रांत वाइज मिलती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो योग वशिष्ठ में जो योग वशिष्ठ अपने आप में एक बहुत ही सुंदर भारतीय तत्व दर्शन का एक उदाहरण है, और उसमें हमें कहानी मिलती है चुड़ाला की कहानी। तो ऐसी कई सारी कहानी मुख्य धारा से थोड़ी हट के प्रांत वाइज भी माहिर मिलती है, जहां पे हमें जेंडर डाइवर्सिटी बहुत मिलती है। ऑल राइट, एंड आई कैन गो ऑन अबाउट इट। तो इस तरह का हमारा कल्चर रहा है, इस तरह की हमारी विरासत रही है। अब क्या गलत हो गया? सबसे पहले उस जवाब को ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा जब भी हमारे ऊपर दूसरे धर्म के द्वारा प्रभावित लोगों ने राज्य करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसमें आते हैं मुगल। मुगल के दरमियान हमें एक तरह से हमारी संस्कृति का ओवरऑल डिक्लाइन हुआ, नो डाउट अबाउट दैट। और वो डिक्लाइन के साथ साथ हम जो भी बिलीव करते थे, हमारी जो भी मान्यता थी, हमारी हमारी जिस तरह से कल्चर को एक्सप्रेस करने का तरीका था, वो डिक्लाइन होता रहा थोड़ा 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 करते। और उससे भी ज्यादा, मुगल से भी ज्यादा अगर हम एलजीबीटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमें हुई, हमारी थॉट प्रोसेस बदली ब्रिटिश राज के कारण। कारण कि ब्रिटिश राज अपने साथ एक मॉरल कंपस लेके आया, और ये मॉरल कंपस था बिब्लिकल मॉरल कंपस, कि बाइबल के मुताबिक, बिब्लिकल थॉट प्रोसेस के मुताबिक क्या सही है और क्या गलत है। तो आईपीसी 377 जो भारतीय दंड संहिता 377, जिसको हमने बस कुछ साल पहले 2018 में निरस्त किया, ये भारत के द्वारा लाई गई बात नहीं है, ये ब्रिटिश के द्वारा लाई गई थी, और जिसने क्लियरली एलजीबीटी आइडेंटिटी को क्रिमिनलाइज्ड कर दिया, कानूनी तौर पे उसे जो है वो दंड के अंदर समाहित कर दिया। इसके पहले दंड संहिता नहीं थी एलजीबीटी लोगों के खिलाफ। और जब भी आप किसी को गैर कानूनी कर देते हो, जब भी आप ये कह देते हो कि आप लोगों ने ये कार्य किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो लोग करना बंद नहीं करेंगे, लेकिन लोग छुप के करना कर देंगे। तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो समाज से विड्रॉ होने लगती है। तो सबसे ज्यादा बड़ा योगदान अगर हिंदू सिविलाइजेशन में एलजीबीटी आइडेंटिटी को मिटाने का किया है, तो वो ब्रिटिश राज ने किया, जिन्होंने आईपीसी 377 लाया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मुगल्स, all the way giving much more contribution by the British Raj, and over 200 years of ruled by British, almost wiped out the queer identity, the diverse gender identity celebration from our public life completely. और जैसे जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने समझाया भी, और हम स्टार्टिंग से यही बात करते हुए आ रहे हैं कि रिलीजन किस तरीके से एक बेड़ियों में बांध के रखा है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, चाहे वो अब्राहमिक रिलीजन हो, चाहे कैथलिक रिलीजन हो, और ये सभी नेशंस, चाहे मुगल का रूल हो, चाहे इंग्लिश का रूल हो, दे वर ऑल अबाइडेड बाय देयर रिलीजन व्हेन इट कम्स टू criminalizing or not criminalizing. Absolutely. If you see, the Hindu civilization divides all human activities in 4 categories. All human activities. No human on this planet ever lived, is living, or will ever live, which is doing any activity which is beyond this 4 classic classification described or mentioned in Hindu civilization. The first one is Dharma Purush, which is called as Purusharthas. The classifications are called as Purusharthas. The first one is Dharma Purushartha. All your religious activity or activities which are done part of your duty. So आप अपने
आपको जो मानते हो और उस मान्यता के आधार पे आप जो भी कार्य करते हो वो धर्म पुरुषार्थ है। यानी कि अगर मैं अपने आप को एक बेटा मानता हूँ, अगर मेरा अहंकार, मेरा ईगो, यहाँ पे अहंकार कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, इट्स द क्लासिकल वे टू लुक एट हिंदू थियोलॉजी। तो अगर मेरा अहंकार अपने आप को बेटा मानता है तो माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अगर मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ तो टैक्स पे करना और भारत के जो सारे कानून है उसको फॉलो करना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। तो द एक्टिविटीज डन आउट ऑफ योर ड्यूटीज आर धर्म पुरुषार्थास। ठीक है। सेकंड इज अर्थ पुरुषार्था। First of all, very simple understanding would be the activities done to generate wealth are called as अर्थ पुरुषार्थास। लेकिन उसका एक सटल मीनिंग ये भी हो सकता है कि जो अपने आप आपको अपने जीवन में अर्थ देता है, जो मीनिंग देता है, कुछ कुछ मतलब देता है, वो अर्थ पुरुषार्थ है। तो जैसे कि मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है तो वो मेरा अर्थ पुरुषार्थ हो गया। कई लोगों को कविताएं लिखना अच्छा लगता है, कई लोगों को म्यूजिक प्रोड्यूस करना या सुनना अच्छा लगता है, वो अपने आप में एक जिंदगी में एक मकसद देता है, तो वो आपका अर्थ पुरुषार्थ हो गया। द एक्टिविटी विच ब्रिंग अर्था टू लाइफ, वेल्थ अलॉन्ग विद द मीनिंग, जीवन में कुछ अर्थ तो होना चाहिए, तो वो अर्थ पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ। Last one I'll talk and then I'll come to the third one. The last one is moksha purushartha. These are not activities done, but this happens automatically, that you reach to a stage in life when you withdraw yourself from certain activities. Then this act of withdrawing yourself from various activities are called as moksha purushartha. And also the conversation of liberation, mukti, all this falls under the moksha purusharthas. Along with these three, the third one was Kama Purushartha. The activities done out of your desire, यानी कि आपकी कामनाओं से, आपकी इच्छा से होने वाले कार्य को काम पुरुषार्थ कहा गया है। और खूबसूरत बात देखिए हिंदू सिविलाइजेशन की, चाहे वो धर्म पुरुषार्थ हो, चाहे वो अर्थ पुरुषार्थ हो, चाहे वो काम पुरुषार्थ हो, या चाहे वो मोक्ष पुरुषार्थ हो, ये चारों पुरुषार्थ में किसी को भी निंदनीय नहीं कहा गया है। हर पुरुषार्थ का हर एक के जीवन में अपना अपना अलग अलग स्थान पे जो है उसका महत्व है। तो ये नजरिया है हिंदुइज्म का जिंदगी को देखने की ओर, कि जहां पे हर एक बात को अपना अपना उचित स्थान है और उसको कंडेम नहीं किया गया है। तो दैट्स हाउ वी लुक्ड एट ह्यूमन लाइफ, दैट all aspect of our life was beautifully synchronized and celebrated. So we've been talking about LGBTQ community today, and it's very important and sensitive issue also to take up and talk. So, what do you see the future of LGBTQ community in India according to the efforts that's being made by government and civil society? Well, as an optimistic person, let me start by saying that I am tremendously proud of the achievement we as a civilization and we as a nation have done in past 50 years for queer rights. The reason I say this is because there was a generation before me who were criminalized for their identity. And here I am, living, breathing, standing in front of you, saying that I'm no more a criminal in my own country. This would have not been possible without the contribution of n number of community leaders, civil society organizations, and activists in last 50, 70 years and their effort. So because of their continuous effort, we are where we are standing right now. Point number two, I am much more proud of we as a country and that what we have achieved in past 7 to 10 years. Like never before in the history, we have seen so many people comfortable coming out and talking about their identities and orientations. We are seeing support from almost all the section of the society. We have doctors association coming out and marching for equality when Mumbai Pride happens. We have parent support group called Swikar. Parents who happens to have queer children have come out, filed petition in the Honorable Supreme Court of India talking about their rights, and they saying that here I am and I am proud of my child.
irrespective of their gender identity and orientation. How wonderful is that, right? We are seeing support by various religious and spiritual organizations. To give an example, Gurudev Shri Ravi Shankar, founder of Art of Living, he was the first spiritual leader who tweeted in favor of LGBT people, not now, but in 2013 when a negative judgment of Supreme Court came in. He was the first one to tweet saying that, what are we talking about? I'm paraphrasing it. It is not his exact word. I don't remember the exact word, but the paraphrasing is that what are we talking about criminalization and decriminalization? We as a civilization say that marriage is between two souls and souls are gender beyond. तो आप ये क्या फाइट कर रहे हो भाई कि इनको क्रिमिनल है कि नहीं है? हमारे यहाँ पे तो शादी दो व्यक्तियों के बीच में होती है, दो व्यक्ति के नहीं, दो आत्मन के बीच की बात है, और आत्मा तो कोई जेंडर ही बात नहीं है, राइट? सो वी आर सीइंग many spiritual leaders are coming out in support, or at least can we all agree to the point from the religious point of view that homophobia, which was peddled by religious leaders, including from Hinduism, Baba Ramdev, completely stopped, right? All the people of religious authority who went into the Supreme Court and lost their case, to the end, at least they had already given up before the judgment came in. To be very honest, if you read the court proceedings, you will see that their side was already losing, and then they gave up already before the judgment came in. And after the judgment came in decriminalization, all these so-called religious leaders have completely stopped talking against LGBT identity. Isn't it that an achievement? Of course, in my understanding, that is. So we are getting acceptance from them. And above all of this thing, we are seeing political parties coming out in support. We are seeing NCP having their LGBT cell. We are seeing Congress, Professional Congress having their LGBT cell. We are seeing much more socio-political groups coming out and talking about LGBT rights. We are seeing transgender rights being acknowledged by the parliament. Right? We are seeing the Trans Act. There are challenges in it, but Transgender Act passed by the parliament. Could you have imagined this 10 years ago? We are seeing a national level board set up by the central government to look after transgender rights, which has representation from north, south, east, and west, all parts of the country. We are seeing so many state governments having the legislation passed to protect LGBT rights, particularly trans rights. We are seeing progressive judgments after judgments by various high courts. We in 2022 are also seeing the time wherein there are over 4 petitions filed in Delhi High Court and other high courts of the country talking about marriage equality. Now you tell me, isn't it a wonderful time to live in? We are seeing so many business houses coming out in support with their active D&I policies in place, diversity, equity, inclusion policy in place, right? So as an optimistic person, let me start by saying that I am tremendously proud of we as a civilization and we as a nation, what we have achieved in last 10 to 15 years. At the same time, there is a lot more needs to be happening for the community. We as a country also saw over 7 cases of suicide since the first lockdown started 2 years ago. We as a community have seen, I mean, these 7 cases, though personally I know of, there can be more than this. I personally know of 7 individuals from community committing suicide because they were not accepted by their family, friends, and surroundings. We as a country have also seen funny, derogatory comments made against community by political leaders. We as a community have also seen laws which restricts rights of parenthood and parenthood not being accessible to LGBT people through surrogacy or adoption, right? So it's a mixed basket with much more happy flowers in it and some challenges along with it, and we all are working for it. And definitely, we can vouch for the fact that we come from a civilization and we are part of change, which is helping people to accept their identities, and what better thing it could be. We are Absolutely. towards. And the change is a constant process, friends. It is not like a Netflix show wherein you say that, oh, today is a sad day, and the next episode you start with, or the next season suddenly it starts from some happy situations, right? Change is a constant process. No country is perfect.
That's why even India is not perfect. What are you doing about it is the question, instead of what they have done for you. I, as a person who believe that it is my right and my responsibility, right and responsibility both, to work for my community and try to bringing a change in a positive way, instead of making somebody a victim and somebody a villain. And I don't believe in the activism of hate, but I believe in activism of love and care. That's why I don't like to call myself as a victim of anything. Of course I'm not, because when I look at myself comparing to so many other countries, especially in the Middle East or religious controlled countries, where I could be given a capital punishment or thrown out of a building for just my identity, I'm at much better stage, right? And I'm constantly working to improve the situation. So we are at much better stage. It's an optimistic future, and I say the queer rights in India has a bright future. And I'm very sure about this. We are towards the end of the section, and I'm sure for the audience as well, it must have been very enriching session. People must have got to know lot many things which was so much unfolded for all these years about LGBTQ community, and this is going to give them a new reflection. uh, this was our initiative to actually reflect what was unfolded. So, something you would like to give message to our team and to our initiative. Yes, and that would be very simple. Please try to use your area of influence in bringing about the positive change. You don't need to be somebody who has so much of authority or power. You don't need to be CEO of a company. You don't need to be a legislator. You don't need to be a Supreme Court judge to bring a change. If you are, please use your power to bring the change. But at the same time, if even if you have like 100 followers on Instagram, right? Can you talk about LGBT rights on your Instagram? If in your friend circles somebody is making derogatory comments or making fun of the LGBT community, can you tell them that, hey, stop, this is not appropriate? And when they ask you back, you तू part है क्या community का, या तू part है क्या community की? He said, no, it's not about that. Do I need to be a tree to support environment? Do I need to be animal to support animal rights? No, that the same way I don't need to be queer to support queer rights. This is the right thing to do, to support queer rights, right? So please use your area of influence. Third is that if somebody comes out to you, they have put so much of comfort and trust in you that that's why they're coming out to you. I request you, if you're not able to accept them, at least hear them out and say that, hey, I don't understand at this stage, but I'm open to learn. Don't consider yourself an enlightened being who knows everything and shut the door of learning. Please be open, keep your hearts and mind open, because we are just like all of you. We want to have the same life, equal rights as all of you. We are not asking for any privileges or extra rights or special recognition. No, except some trans rights, because they have been actively discriminated for such a long time. They require reservations and rights, special rights for equal status in the society. But apart from them, we as a LGQ community, LGBTQ community, apart from trans, we're not asking for any special rights. We are asking for the equal rights. We want to go in the same school as you. We want to have our degrees. We want to be employed just the way you are want to be employed. We want to get married to a partner whom we love, and we want to have the fight, as equal fight as you may be having with your husband, wife, girlfriend and boyfriend, right? So we are not just same. We are not asking for any special rights. That's why please recognize us. It's time that world is opening. Are you opening your heart and mind as well or not? And let me end, because our conversation was focused so much on religion, especially Indic civilization and Hinduism. Let me say this, that when Krishna ate dirt and when Mother Yashoda caught him, a baby Krishna had ate a dirt and Mother Yashoda caught him. And Mother Yashoda asked him, open your mouth, open your mouth. And in so much of fear, Lord Krishna opens his mouth. And what did Mother Yashoda see? She saw the whole universe in the mouth of Lord Krishna.
कन्हैया ने अपनी मैया को विश्वरूप दर्शन कराया उनके मुखारविंद में. Now you tell me, when Krishna would have opened his mouth, would he have excluded queer community people, people like me, who is created by himself? Of course not. And if Krishna is not excluding us, who the H are you to exclude queer people? If Krishna can accommodate us, who are you to give your little small judgments against us? Thank you. We are ending with a very, very positive note and very beautiful explanation for the entire things that we have discussed. And definitely, we are part of change. And if we really want to be a change, we need to be the change in ourselves. And this is what Ankit ji has been telling us throughout. Thank you so much for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you. Thank you very much. Thank you so much for having me. And it's a great honor and privilege to connect with all of you. I had a wonderful time. Please supporting LGBT rights and all the equal rights causes you believe in. Jai Hind. Namaste. Thank you so much. And this live will end. We get and that